Modern approaches behavior and system. Modern approaches emerged mainly in the 20th century. मॉडर्न अप्रोच कब से इमर्ज हुए हैं? 20th century से, स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. 20th century शुरू हुए मॉडर्न अप्रोचेस वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद. These approaches focuses more on the scientific study. किसे फोकस करते हैं? साइंटिफिक स्टडी पे, empirical evidences and objective rather than the philosophical, historical or law which were the traditional approaches. मतलब ये ज़्यादा किसे फोकस करता है? साइंटिफिक स्टडी फोकस करता है, एम्पेरिकल एविडेंसेस फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव्स किसको छोड़िए, रादर देन फिलोसफी को पे नहीं करता है, हिस्ट्री पे नहीं करता है, और लॉ, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस है. मॉडर्न अप्रोचेस ट्राई टू स्टडी द पॉलिटिक्स एज इट इज रियलिटी. मॉडर्न अप्रोच किस तरह से पॉलिटिक्स स्टडी करता है जैसे कि पॉलिटिक्स रियलिटी है, नॉट जस्ट इट्स ऑट टू बी आइडियल. Behavioral approach, meaning the behavioral approaches focuses on the study of the political behaviors. किसे फोकस करता है? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स की स्टडी पे ऑफ individuals and groups rather than on formal institutions like the state constitutions or law. It studies how people actually behaves in politics, not how they are supposed to behave. Features, characteristics. Empirical study based on facts, observation, and measurable data. Focus. Focus on the individual and group behavior. This individual group के behavior, जैसे voters, leaders, interest groups, lights, etc. Interdisciplinary uses methods from psychology, sociology, anthropology, economics, etc. Use of the scientific methods, theories, interviews, statistical analysis, sampling experiments. Prediction tries to predict public behavior, example voting patterns, public opinions. Value natural, free from personal biases and moral judgment. Micro level analysis studies the individual political attitude and opinion. एग्जाम्पल क्या है इसकी? स्टडिंग वाई पीपल वोट इन पर्टिकुलर वेज, कि लोग अलग अलग वे में वोटिंग करते हैं, किसी कास्ट बेसिस पे करते हैं कोई वोट, रीजनल मीडिया इन्फ्लुएंस एंड आइडियोलॉजी. एनालाइजिंग पब्लिक ओपिनियन theories बिफोर इलेक्शंस. Criticism: too much focus on the behavior, ignoring institutions and values. Political behavior is complex, cannot be predicted like natural science. Sometimes it neglects moral and philosophical questions like the justice, liberty, and equality. Systematic approach, meaning developed developed by David Ashton in 1950. Systematic approach developed किया डेविड एस्टन ने कब किया था? 1950s में. Political science is seen as a system of interaction through which the values are authority allocated or distributed in the society. It studies the politics as a living system. एक प्रोसेस रहेगा था कि लिविंग सिस्टम का स्टडी करता है, लाइक ए बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम. Elements of the political systems. Aston's model. Input, demand, public public needs, protest, elections, and support में क्या है? Loyalty, tax, obedience. Conversion process. Public institutions आते हैं इसमें, गवर्नमेंट, parties, bureaucracy, parliament, that process inputs into the policies. Outputs, discussions on policies, law, welfare schemes, taxations, reforms.
Feedback reacts reaction of the pupil to policies, criticism, support, protest, re-elections, environment, social, economic, cultural, and international conditions affect the system. Example: criticism, demand better roads input. Government processes demands through parliament conversions. A new road builds policies is made output. Citizens respond positively or negatively feedback. The system adjusts for future demands. Criticism. Too abstract and mechanical. Ignorance. Conflicts, powers, strategical and inequality. More descriptive than explanatory. Assumption. Stability but real. Politics is often unstable. Comparison. Behavioral versus सिस्टमेटिक अप्रोच एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके बिहेवियर देखेंगे सिस्टमेटिक देखेंगे फोकस क्या है इंडिविजुअल एंड ग्रुप ग्रुप बिहेवियर फोकस होता है बिहेवियर अप्रोच का और सिस्टमेटिक का होता है होल पॉलिटिकल सिस्टम पे मेथड्स एम्पेरिकल साइंटिफिक फिलोसफिकल टूल्स इनपुट आउटपुट होलिस्टिक स्ट्रक्चरल एम predict of the political behavior understanding functions of political systems level micro level macro level limit ignores the institutions and values to abstract ignores conflicts conclusion behavioral approach made political science more scientific by studying political behaviors with empirical data system approach gave a holistic model to understand how political demands are converted into decisions and policies. Both are complementary. One studies the individual actions, the other studies the systems as a whole.